The topic of discussion is thermochemistry, and the subtopic is first law of thermodynamics. Let's see in detail the first law of thermodynamics. So, the first law of thermodynamics is stated as energy can neither be created nor destroyed but can be changed from one form to another. In other words, a system cannot destroy or create energy. एक सिस्टम ना तो एनर्जी क्रिएट कर सकता है और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसे कन्वर्ट करेगा. However, it can exchange energy with its surroundings in the form of heat and work. वो उस एनर्जी को एक्सचेंज दो तरह से कर सकता है, हीट या वर्क की फॉर्म में. So the energy of the system and surroundings remains same. Let's see the derivation. Consider a gas cylinder having a frictionless piston. We have a gas cylinder. जिसमें जो piston है वो frictionless है. When a quantity of heat Q is supplied to the system, its internal energy E1 changes to E2 and piston moves upward. जब हमने उस गैस सिलेंडर को हीट सप्लाई की तो जो उसकी इंटरनल एनर्जी थी वो E1 से चेंज होकर E2 हुई और पिस्टन ने अपवर्ड मूव किया क्योंकि गैस एक्सपैंड हुई. जब भी हम गैस को हीट करते हैं तो गैस एक्सपैंड होती है जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा. वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी. So the change in internal energy is given by the following equation. Delta E equals to E2 minus E1 equals to Q plus W. So delta E यानी कि change in internal energy equals to Q plus W. Here we have a system, gas cylinder having a frictionless piston. उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी वो ये थी पिस्टन की. उसे हमने हीट सप्लाई की जिसकी वजह से गैस एक्सपैंड हुई, वॉल्यूम चेंज हुआ और पिस्टन की जो फाइनल पोजीशन है वो असेंड हो गई. सो जो डेल्टा यू चेंजेस इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू. प्रीवियस एक्सप्रेशन में हमने क्यू प्लस डब्ल्यू पढ़ा था. सो हम साइन कन्वेंशन देख चुके हैं कि अगर वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो जो वर्क के साथ सिंबल आएगी वो माइनस की होगी. सो प्रीवियस स्लाइड में जो एक्सप्रेशन था वो जनरल एक्सप्रेशन था. यहाँ पे हमने उसको सिस्टम के साथ रिलेट करके यहाँ पे माइनस का साइन ऐड कर दिया है. In this equation, Q represents the amount of heat absorbed by the system. W is the work done by the system in moving the piston up. If W is the pressure volume work, then expression assumes the form. So in the previous slide, we have reduced an expression that is delta E equals to Q plus W. जो changes internal energy था वो हमारे पास heat supplied plus work done के equal था. So अगर हम इस work done को pressure volume work के साथ substitute करें, so expression would be delta E equals to Q minus P delta V. So minus sign indicates work is done by the system. अगर system work करेगा तो जो sign convention आएगी वो हमारे पास negative आएगी. So when the piston is kept in its original position or the volume of gas is not allowed to exchange, then delta V and the equals to 0 and equation will be. So अगर हम उस piston को उसकी original position पे रखें और हम इस तरह की conditions बना दें कि gas expand नहीं हो जिसकी वजह से उसका volume change नहीं हो, तो delta V would be equals to 0. So equation would be delta E equals to QV. So अगर हम यहाँ पे delta V को 0 पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा expression 0 हो जाएगा. So delta E would equals to QV. So in this slide you can see original position piston की ये थी. जब हमने हीट सप्लाई की गैस एक्सपैंड हुई तो जो पिस्टन की पोजीशन है वो असेंड हो गई. सो ये डेल्टा वी हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम आया. सो अगर हम यही चेंज इन वॉल्यूम जो है वो खुद से कंडीशंस रख के उसको जीरो के इक्वल पुट कर दें, सो चेंज इन एनर्जी वुड बी इक्वल्स टू क्यू वी. So the expression which we have reduced is E equals to QV. It means that
A change in internal energy of a system at constant volume is equal to heat absorbed by the system Q. यानी कि अगर एक सिस्टम को हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई करेंगे तो वो सारी की सारी जो हीट है वो इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी. So जितनी हम हीट सप्लाई करेंगे would be equivalent to the change in the internal energy. So क्योंकि वर्क डन है नहीं तो सारी की सारी जो हीट है वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूटिलाइज होगी. Here are some limitations of first law of thermodynamics. Number one is first law doesn't say anything about whether the process is possible or not. So first law हमें किसी भी रिएक्शन की feasibility के बारे में कोई information नहीं देता. Second is first law of thermodynamics doesn't say whether the process will occur on its own or not. It doesn't tell about the nature of the reaction, that either reaction is spontaneous or non-spontaneous. And the third point is first law doesn't provide any sufficient condition for a certain process to take place. ये हमें नहीं बताता कि हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्या प्रेशर कंडीशंस होंगी और क्या कैटलिस्ट की हमें ज़रूरत है या नहीं है. Let's discuss a question which is not a state function, and the options are thermal energy, internal energy, enthalpy, work done, and the correct option is work done. Here is a practice MCQ stated as the work done by expansion of gas against constant pressure is P delta V, minus P delta V, PV, or delta PV, and the correct option is minus P delta V. क्योंकि जब भी सिस्टम वर्क करता है so जो pressure volume work होगा would be negative. So this was all about today's lecture. I hope you have understood it very well, and thank you so much.